Hello children, how are you all? I hope you all are fine. So from the book Periwinkle, a book of science and technology by Coral Publishers, we are going to start chapter number 2. And the chapter number 2 name is Nutrition in Animals. So let's see. Now, after learning this chapter, students will be able to explain the different ways of taking food. खाना लेने के डिफरेंट वेज को एक्सप्लेन कर पाओगे आप लोग. डिस्क्राइब पार्ट्स ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, डिस्क्राइब डाइजेशन इन herbivores, carnivores and omnivores, explain the feeding and digestion in amoeba and explain the mammalian digestive system, describe the digestion in human beings. Now first of all we will see the introduction. Food is one of the basic need of all organisms. Everything we eat for the nourishment of our body is called our food. The food consumed by animals and humans is utilized for their growth, development and repair of the body and for performing various activities. Did you ever think what happens to the food inside the body of an animal and a human? So बच्चों, फूड हमारी सभी ऑर्गेनिजम्स की एक बेसिक नीड है. हम अपनी ग्रोथ के लिए, डिफरेंट एक्टिविटीज़ को करने के लिए, अपनी डेवलपमेंट को करने के लिए फूड को खाते हैं, राइट. सो जो भी हम अपनी बॉडी की नरिशमेंट के लिए खाते हैं उसे फूड कहते हैं. लेकिन कभी आपने सोचा है कि जब वो फूड हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो उसका क्या होता है, चाहे वो किसी इंसान के अंदर जाए या किसी एनिमल के अंदर. सो first, the food is broken down into simpler substances through a series of processes. तो सबसे पहले एक प्रोसेस होता है, एक सीरीज ऑफ प्रोसेसेस होती है, उसके थ्रू फूड को ब्रोकन डाउन किया जाता है. किसमें? सिंपलर सब्सटेंसेस में, छोटे छोटे सब्सटेंसेस में. देन इट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द ब्लड. द ब्लड कैरीज इट टू ऑल द लिविंग सेल्स फॉर यूटिलाइजेशन. फिर ये एब्जॉर्ब होता है ब्लड के द्वारा और फिर ब्लड इसे सब सेल्स पर ले जाता है कि वो इसे अपने तरीके से यूटिलाइज कर सकें. द एक्ट और प्रोसेस बाय विच एनिमल्स टेक्स इन एंड यूटिलाइज फूड मटेरियल इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. Animals are called consumers because they consume the food manufactured by the green plants. एनिमल्स को कंज्यूमर्स भी कहा जाता है क्योंकि वो उस फूड को कंज्यूम करते हैं जो ग्रीन प्लांट्स बनाते हैं. फूड कंटेन्स मेनी कंपोनेंट्स, बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं सच एज कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स एंड विटामिन्स. वी हैव रेड दिस इन प्रीवियस चैप्टर. These components of food are in complex form. ये food में complex form में होते हैं. They cannot be utilized as such. ये ऐसे ही जैसे हम खा रहे हैं वैसे ही body इसे utilize नहीं करेगी. So they are broken down into simpler form. Body इसको simpler form में broke down करती है. The process of breakdown of complex food into simpler substances is called digestion. Okay? So यही जो प्रोसेस होता है जब कॉम्प्लेक्स फूड को ब्रेक डाउन किया जाता है सिंपल सब्सटेंसेस में, तो इसी को कहते हैं डाइजेशन. ओके. नाउ व्हाट न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. एज ह्यूमन एंड एनिमल्स कंज्यूम देयर फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, सो देयर न्यूट्रिशन इज सेड टू बी होलोजोइक टाइप. वो एक ऑर्गेनिक मैटर के फॉर्म में अपने फूड को कंज्यूम करते हैं तो उन्हें कहा जाता है होलोजोइक टाइप. The main steps of Holozoic nutrition are discussed below. Ingestion. So this is the process of taking food into our body. जब हम अपनी बॉडी में फूड को लेते हैं तो वो ये प्रोसेस होता है. It includes 2 steps: capturing food and putting it into mouth. Okay, हमने फूड को पकड़ा और अपने मुंह में डाला. Different animals have different organs to take food into their body. Herbivores like cows and buffaloes quickly swallow the grass. वो एकदम से निगल जाती हैं ग्रास को. Insects like butterflies, bees and mosquitoes have proboscis to suck food. वो फूड को suck करते हैं proboscis के थ्रू. Okay? Now frogs capture their prey using their long tongue. Frog अपनी long tongue से फूड को पकड़ते हैं. And human beings swallow food after chewing. और ह्यूमन बींग्स यानी कि हम पहले चबाते हैं और फिर उसे निगलते हैं.
एंड अमीबा हैज false foot called pseudopodia, okay, to engulf its prey. So अमीबा के पास एक false foot होता है जिसको कहते हैं pseudopodia, जो अब इसके थ्रू अपने शिकार को ये पकड़ता है, right? A butterfly sucking nectar from a flower. This is a figure 2.1. Now we will learn about digestion. The ingested food मतलब जो हमने पकड़ा और हमने खाया, which is in the complex form, जो कि complex form में है, is required to be broken down into simpler form to obtain energy for maintaining life processes. अब उसे ज़रूरत है कि वो broken down किया जाए किसमें, simpler form में, एनर्जी को लेने के लिए, जो कि required है किस लिए, लाइफ प्रोसेसेस को मेंटेन करने में. Digestion is the process of breaking down complex food into simple form. So digestion क्या है, यही प्रोसेस है कि फूड को ब्रेक डाउन किया जाए सिंपलर फॉर्म में for the body to absorb it. In most animals, the process of digestion includes both physical and chemical digestion. In physical digestion, the big-sized food particles are broken down into smaller units. I am reading from in. In chemical digestion, the complex substances are converted into simple and absorbable form. Now, absorption. Absorption किसे कहते हैं? The simple substances, अब फ्रूट को हमने ब्रेक डाउन कर लिया, वो simple substances में आ गया. The simple substances resulting from the process of digestion are absorbed by the blood. फिर वो blood उसको absorb करता है. Why? To carry to all living cells. This process is done into small intestine. कहाँ होता है सारा process? हमारी small intestine में होता है. The cells, वहाँ पर जो cells होती हैं, use the digested food for various body activities and functions. फूड को, डाइजेस्टेड जो फूड है उसको यूज़ करती हैं हमारी बॉडी के डिफरेंट एक्टिविटीज़ और फंक्शंस के लिए. नाउ एसिमिलेशन. द सेल्स ऑफ द बॉडी make use of absorbed nutrients in the formation of some constituents and in obtaining energy for them. So the cells of the body, जब हमारी बॉडी की सेल्स होती हैं वो यूज़ करती हैं absorbed nutrients का किस फॉर्म में, in the formation of some constituents and in obtaining energy for them. Assimilation is the process of utilizing absorbed nutrients for energy, growth and protection of the body. Now, digestion. All the ingested food is not digested. सारा जो भी हम फूड खाते हैं वो सब हमें डाइजेस्ट नहीं होता है by the body. Some of it remain undigested in the body. कुछ बॉडी में indigested रह जाता है. The undigested food material which is harmful for the body is thrown out in the form of feces. So जो undigested food होता है वो हमारी बॉडी थ्रो कर देती है. कैसे? हम यूरिन जाते हैं, राइट, हम फ्रेश होते हैं, सो इन द फॉर्म ऑफ फेसेस वो सब निकल जाता है. दिस प्रोसेस ऑफ एक्सपेलिंग अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड digestion. The human digestive system consists of an alimentary canal and various accessory glands that secrete digestive juices into it through ducts. Okay? So जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें एक एलिमेंट्री कैनाल होती है और बहुत सारे एक्सेसरी ग्लैंड्स होते हैं जो सिक्रीट करते हैं कई तरह के डाइजेस्टिव जूस, ओके, इनटू इट थ्रू डक्ट्स. लेट अस नो अबाउट देम. नाउ दिस इज द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, यू कैन सी हियर. सो सबसे पहले माउथ. फर्स्ट द फूड इज टेकन इनटू द माउथ. सबसे पहले खाना कहाँ जाता है? माउथ में जाता है. इट इज़ इंजेस्टेड. ये क्या, कौन सा प्रोसेस है? इट इज़ इंजेस्टेड. नाउ द फ्लेवर एंड साइट ऑफ फूड स्टिम्युलेट्स द सलाइवरी ग्लैंड्स लोकेटेड इन द माउथ टू सिक्रीट अ डाइजेस्टिव फ्लूइड कॉल्ड सलाइवा. तो जो फूड की साइट होती है, मतलब कैसा उसका लुक है, कैसा उसका फ्लेवर है, वो सलाइवरी ग्लैंड को स्टिम्युलेट करता है और फिर एक डाइजेस्टिव फ्लूइड बनता है हमारे मुंह में जिसे हम कहते हैं सलाइवा. कंसिस्टिंग ऑफ वाटर एंड एंजाइम्स. उसमें क्या होते हैं? वाटर होता है और एंजाइम्स होते हैं. इट इनिशिएट्स द केमिकल्स एंड मैकेनिकल डाइजेशन ऑफ फूड. ये शुरू कर देता है फूड की केमिकल एंड मैकेनिकल डाइजेशन को.
द टीथ एंड टंग आर रिस्पॉन्सिबल, हमारे जो टीथ हैं और जो टंग है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द ब्रेकिंग ऑफ लार्ज फूड पार्टिकल्स इनटू स्मॉलर फूड पार्टिकल्स while increasing surface area for faster chemical digestion. ओके, सो ये क्यों करते हैं ऐसे, ताकि हमारा जो डाइजेशन है, केमिकल डाइजेशन है, वो तेजी से हो. सो amylase is the enzyme secreted. The teeth and tongue move the food to change it into a bolus. The tongue moves the bolus to the back of the throat for swallowing. Okay, so फिर हम उसको swallow करते हैं. The bolus enters the esophagus. So now this is the science in context. Just read it. There are a large number of small bird-like structures called taste buds on the tongue that they detect the taste such as salt, sweet, sour and bitter. Now the purpose of the saliva is to lubricate the food for swallowing. अब जो हम food को swallow करने वाले हैं उसे वो lubricate कर देती है, dissolve water soluble food particles and start chemical digestion of carbohydrates into smaller molecules. फिर आते हैं, फिर हमारा जो फूड है वो कहाँ पहुँच जाता है, ओइसोफेगस. Oesophagus is a tube-like structure. You can see here. Oesophagus is a tube-like structure that connects mouth to the stomach. जो connect करता है mouth को stomach के साथ. It is located behind the windpipe. ये windpipe के पीछे है. Also called trachea. Okay, the trachea consists of an epiglottis to prevent food from entering into it. ट्रैकिया में क्या होता है, एपिग्लॉटिस होता है जो फूड को विंड पाइप में नहीं जाने देता. एंड द फूड मूव्स डाउन द ओइसोफेगस थ्रू अ सीरीज ऑफ रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन कॉल्ड पेरिस्टाल्सिस. द लाइनिंग ऑफ द ओइसोफेगस सिक्रीट म्यूकस. अब जो लाइनिंग है ओइसोफेगस की वो किसे सिक्रीट करती है, म्यूकस को, ल्यूब्रिकेटिंग टू सपोर्ट द मूवमेंट ऑफ फूड. उसमें वो जो वहाँ से जो हमें ये म्यूकस मिलता है, ये किस में हेल्प करता है, मूवमेंट ऑफ फूड, मतलब कि फूड की मूवमेंट चलती रहे. वंस द स्टमक इज फुल ऑफ फूड, जैसे ही एक बार स्टमक फूड से फुल हो जाता है, द पेरिस्टाल्टिक वेव्स स्टॉप. ओके, सो ये जो पेरिस्टाल्टिक वेव है ये रुक जाती है up until gastric juices dissolve the extra lipids in the food particles. These peristaltic motions are stopped. Now stomach. The stomach is a muscular organ located in the abdominal cavity. ये कहाँ है, abdominal cavity में है. It stores food temporarily for a few hours. ये food को temporary कुछ घंटों के लिए अपने पास स्टोर करता है. द मैकेनिकल डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन द स्टमक. द स्टमक वॉल्स चर्न द बोलस, फिर बोलस को स्टमक वॉल चर्न करती हैं एंड मिक्स इट विद द गैस्ट्रिक जूसेस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सॉल्ट्स, एंजाइम्स, वाटर एंड म्यूकस. बोलस को चर्न करके उसे इन सारे जूसेस के साथ वो मिक्स कर देती हैं. ओके, secreted by the lining of the stomach. और ये सारे juices कौन secrete करता है, lining of stomach. Now the bolus is called chyme. The environment of the stomach is very acidic. Okay, hydrochloric acid kills any microbes that are found in the bolus. So mucus prevents the stomach from digesting itself. Pepsin, an enzyme, initiates the breakdown of proteins found in the फूड. अब जो फूड में प्रोटीन है उसे ब्रेक डाउन करता है पेप्सिन, वो भी एक एंजाइम है. द काइम मूव्स फ्रॉम द स्टमक टू द स्मॉल इंटेस्टाइन. अब इस सारे प्रोसेस के बाद जो हमारा फूड है वो बच्चों, काइम जो है वो स्टमक से चला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, राइट. इट पासेस थ्रू अ मस्कुलर रिंग स्फिंक्टर कॉल्ड द पाइलोरिक स्फिंक्टर. सो इसके थ्रू ये चला जाता है कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में. देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन अब हम पढ़ने वाले हैं. दिस इज अ पिक्चर ऑफ लिवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियास एंड डियोजेनम. ओके, सो द स्मॉल इंटेस्टाइन इज अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग, कॉल्ड ट्यूब विच रिसीव्स काइम फ्रॉम द स्टमक, जो रिसीव करती है काइम को स्टमक से.
Its walls also secrete digestive juices that break down proteins, carbohydrates and fats into simpler soluble substances. So इसकी जो वॉल है वो डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रीट करती हैं जो कि ब्रेक डाउन करते हैं फिर आगे प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट्स को, फैट्स को और ज़्यादा सिंपल सॉल्यूएबल सब्सटेंसेस में. The walls of the small intestine absorb these nutrition and pass them to the blood. The blood carries these nutrition to different parts of the body. So, the liver is the largest organ in the body. Okay? सबसे ज़्यादा बड़ा organ कौन सा है हमारी body में? Liver. It is located on the right side of the upper abdomen. It secretes bile juice. ये क्या निकालता है? Bile juice that is stored in a sac called the gallbladder, जो कि store होता है gallbladder में. The bile helps in the digestion of fats. Bile help करता है fats के digestion में. The liver performs so many functions in the body that it is called the chemical processing center. Now, the pancreas is a leaf-like gland. एक leaf-like gland होता है which lies just behind the stomach. बिल्कुल stomach के पीछे होता है. It secretes about 2 liters of pancreas juice every day. ये हर रोज 2 लीटर pancreas juice को secrete करता है. The pancreatic juice contains an enzyme called amylase. Okay, so it breaks down carbon dioxide into simple sugars. The small intestine is made up of 3 parts: duodenum, jejunum and ileum. The first part is the duodenum, which is approximately 25 centimeter long. This area completes most of the digestion processes. सबसे ज़्यादा जो process है digestion का वो यहीं पूरा होता है. Enzymes are secreted into the duodenum from the pancreas and the gallbladder. Now, the duodenum is lined by folds of tissue called villi. So ये lined होता है किसके? Folds of tissue से, जिसको हम कहते हैं villi. The villi are supplied with blood vessels. Here blood absorb the digested food. यहाँ पर blood absorb करता है. The folds of villis increase the surface area of the small intestine to increase the rate of absorption. Okay, so ये जो villi के fold हैं ये increase करते हैं small intestine के surface area को. किस लिए? Absorption के rate को बढ़ाने के लिए. This is the small intestine. This is duodenum. Now, the jejunum is approximately 2.5 meter long. It absorbs nutrients. The ileum is about 3 meter long. It pushes the waste material into the large intestine. इसका काम है जितने भी waste material हैं, जो भी undigested food है, उसे large intestine की तरफ throw करना, push करना. The large intestine. The waste material from the small intestine move into the large intestine. The large intestine is approximately 1.5 meter in length. Here about 90% of water is reabsorbed back into the bloodstream. Bacteria in the large intestine break down the waste material, producing folic acid, vitamin B and vitamin K, which are transported to the bloodstream. The rectum stores the fecal matter until eliminated by the anus. The teeth are the hardest part of an animal's body, which are used for holding, cutting, crushing or grinding the food or for offense or defense. Okay, there are 4 kinds of teeth: incisors, canines, premolars and molars. So first of all we will know about incisors. Incisors are the main biting teeth having one root. इसमें one root होते हैं और ये main biting teeth होते हैं. They have a sharp, straight, cutting edge. Okay. There are 8 incisors in our mouth. हमारे मुंह में 8 incisors हैं. They are located in the front and center of the mouth, 4 in the upper jaw and 4 in the lower jaw. Canines. The canines are most pointed teeth. ये सबसे ज़्यादा pointed teeth हैं. Located either side of the incisors. There are 2 canines in each jaw next to incisors. These teeth serve to tear the food apart. ये food को फाड़ने का काम करते हैं, right?
So that is why canines are sometimes called tearing teeth. Then we have premolars. The premolars are used to crush and grind the food. Okay, they have a broad lumpy top instead of a sharp biting edge. The small surface lumps are called cusps. The cusps enable the teeth to mash pieces of food. Premolars are sometimes called bicuspids because they have two cusps. Now there are 8 premolars in our mouth, 4 in the upper jaw and 4 in the lower jaw next to the canines. The first upper premolars normally have 2 roots, the outer premolars have 1 roots. Now molars. The molars like premolars are used to grind food. They are shaped much like premolars but have a large surface. The various molars normally have 3 to 5 cusps and 2 or 3 roots. Okay. Premolars and molars are collectively called cheek teeth. Each jaw has 6 molars at the back. So this is incisor, canine, premolars and molar. Now in elephants, the 2 incisors of the upper jaw constantly grow throughout life and become long and thick tusks. The tusks are modified incisors. This is distinctive feature of male elephant. Okay, so जो हाथी के जो दांत होते हैं ना, टस्क जो होते हैं वो होते हैं incisors. In rodents, incisors are open rooted and continue to grow throughout life. The incisors may be totally absent or lacking on the upper jaw as in oxen. Now, development of teeth. Human beings have 2 sets of teeth in their lifetime, temporary or milk teeth and permanent teeth. Although the timing is different, the development of each of these sets of teeth is similar. The temporary teeth are in place by age 3 years and remain until around 6 years of age, when they begin to fall out to make way for the permanent set of teeth. सबसे पहले टेम्परेरी टीथ आते हैं और 6 साल की उम्र तक वो सारे टूट जाते हैं और फिर वहाँ पर प्लेस बनता है परमानेंट टीथ के लिए. Permanent teeth start to grow in between 6 and 12 years of age. Most adults have 32 permanent teeth, 16 in each jaw. Permanent teeth are larger and take longer to grow than primary teeth. Structure of a tooth. A tooth is divided into 2 basic parts, the crown and the root. The crown is the visible white part of the tooth, whereas the root is not visible. The root extends below the gum line and anchors the tooth into the bone. वो tooth को bone से anchor करके रखती हैं. Each tooth contains 4 kinds of tissue and each does a different job. Then enamel. It is a visible substance that covers the tooth crown. Harder than bones, enamel protects the tooth from decay. It is made up of phosphorus and calcium. Now dentine. Underneath the enamel lies the dentine. Enamel के नीचे dentine होता है. The dentine is not quite as hard as enamel, so it is at greater risk for decay. Now cementum. This tissue covers the tooth root and helps anchor it into the bone. It is softer than enamel and dentine. ये enamel और dentine से soft होता है. Cementum has a light yellow color and is usually covered by the gums, but with inadequate dental care, अगर हम अपने दांतों की ठीक से ध्यान नहीं रखें, केयर नहीं करें, so the gums may become diseased and shrink, exposing the cementum to harmful plaque and bacteria. Now pulp. It is found at the center of the tooth and contains the blood vessels, nerves and other soft tissues that deliver nutrients. Care of teeth. Bacteria are present all around us, even in our mouth and inside our body. हर जगह bacteria होते हैं, but all bacteria are not harmful to us. However, when we do not clean our teeth properly, some harmful bacteria start growing in the mouth. The bacteria
foul particles and the saliva together form a thin sticky layer called plaque on the surface of the teeth. So plaque that is not washed away by brushing produces acid. The acid dissolves the hard tooth enamel. Tiny holes appear on the surface of the enamel which slowly get bigger until one large hole appears. This is called a cavity. फिर हमारे दांतों में लगती है cavity. Brush your teeth thoroughly at least twice a day for 2 minutes each time. Make sure you brush on all sides of your teeth and get your tongue. Brushing during the day will reduce the damage caused by plaque by products and toxins. तो अगर हम अपने दिन में ब्रश करते हैं तो वो रिड्यूस कर देता है उस डैमेज को जो प्लेक प्रोडक्ट्स और टॉक्सिन्स से प्लेक द्वारा हमें होता है. A tongue scraper is an important part of oral hygiene that will also work wonders with stale, smelly breath. Use it to remove the plaque on your tongue, which will freshen breath and presumably slow down the accumulation of plaque on your teeth. Alternatively, you can use your toothbrush to clean your tongue. आप अपने टूथब्रश से भी अपनी टंग को क्लीन कर सकते हैं, right? So इस तरह से this is the proper way to brush teeth. Now digestion in herbivorous. Ruminant is the name given to a grazing animal that chew its cud and has split hooves. Animals such as cows, oxen, sheep, camels, deer, goats and giraffe are ruminants. इनको कहते हैं हम ruminants. Most of the ruminants have a 4-chambered stomach. Okay, 4-chambered stomach होता है. They have a stomach that has 4 separate compartments or cavities. Okay, rumen, reticulum, omasum and obomasum. Such a stomach is called a compound stomach. इस तरह के stomach को हम कहते हैं compound stomach. The food enters the rumen, which is the largest compartment. For the rumen, from the rumen, the food enters the reticulum. वहाँ से कहाँ जाता है? Reticulum पे जाता है food. In these 2 compartments, in दोनों compartment में the food is softened and formed into soft masses called guts. Now, when the animal rests, जब animal rest करता है, the muscles of the reticulum send the soft masses of food back to the mouth. फिर ये वापस इनके मुंह में आता है. The animal chews the food thoroughly into a roundish motion of the jaw. जिस टाइम ये खा रहे होते हैं फटाफट निगल जाते हैं और ये बाद में अपने इसको डाइजेस्ट करते हैं, उसको च्यू करते हैं. दिस इज कॉल्ड द च्यूइंग द कट. नाउ द कट पासिस थ्रू द rumen and reticulum to the omasum. फिर omasum में जाता है. From here the food enters the obomasum, which is the smallest chamber. In the obomasum, the food mixes with the digestive juices and passes into the intestine for its complete digestion. The digested food is absorbed in the blood, which passes to all part of the body. Now, herbivores consumes plant parts such as seeds, leaves and fruits. Because some of these materials are low in easily accessible energy, herbivores have evolved 2 alternatives for releasing the nutrients: pre-gastric and post-gastric fermentation. Gastric fermentation utilizes bacteria that break down the hard cellulose to digest. So herbivores जो है वो प्लांट पार्ट को कंज्यूम करते हैं. ओके, सो इनमें से जो कुछ मटेरियल है वो लो है, मतलब कई बारी नहीं मिलता. एक्सेसिबल एनर्जी उसकी इन ईजिली एक्सेसिबल एनर्जी नहीं होती. हार्बिवोरस क्या करते हैं, वो 2 अल्टरनेटिव को इवॉल्व करते हैं फॉर रिलीजिंग द न्यूट्रिएंट्स: प्री गैस्ट्रिक एंड पास्ट गैस्ट्रिक फर्मेंटेशन. ये जो गैस्ट्रिक फर्मेंटेशन है ये बैक्टीरिया को यूटिलाइज करती है जो कि हार्ड सेल्यूलोज को ब्रेक डाउन करता है डाइजेस्ट होने के लिए. नाउ डाइजेशन इन कार्निवोरस. कार्निवोरस कंज्यूम अदर ऑर्गेनिजम्स. ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स को कंज्यूम करते हैं. Because flesh is easily digested compared to plant material, the digestive system of carnivorous is typically shorter. ये छोटा होता है herbivores की अपेक्षा. In carnivores, the caesium is sometimes reduced
and may be partially replaced by the appendix. Okay, so calcium reduce होता है और कई बारी may be partially replaced by the appendix. Because flesh is so easily digested, carnivores have lost the ability to synthesize some amino acid. नहीं बनता. These amino acids, building blocks of proteins which cannot be synthesized, are known as essential amino acid. So अमीनो एसिड को सिंथेसाइज ये नहीं कर पाते हैं. ओके, और फिर ये अमीनो एसिड जो प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं जो सिंथेसाइज नहीं हो पाते, इन्हें हम कहते हैं एसेंशियल एमिनो एसिड्स. ट्रू कार्निवोरस लैक एंजाइम्स इन देयर सलाइवा टू हेल्प देम डाइजेस्ट फूड. They cannot chew by moving their jaws side to side, but instead rip the flesh into smaller pieces when possible and swallow their food quickly. So ये एकदम से उसको चबाते नहीं हैं अपने खाने को, छोटे छोटे टुकड़ों में फटाफट से उसको फ्लैश को करते हैं और जल्दी से इसको निगल जाते हैं. When the food reaches the stomach, जब फूड पेट में जाता है, digestive enzymes in the stomach begin to break down the food into absorbable form. So वहाँ पर जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो फूड को ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देते हैं एब्जॉर्बेबल फॉर्म में. द फूड देन मूव्स टू द स्मॉल इंटेस्टाइन. फिर फूड कहाँ मूव होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, वेयर मोस्ट ऑफ द एब्जॉर्प्शन अकर्स, एंड देन थ्रू द लार्ज इंटेस्टाइन वेयर वेस्ट इज एलिमिनेटेड, जहाँ पर वेस्ट निकाल दिया जाता है. जनरली कार्निवोर्स हैव पॉइंटेड इंसिजर्स. उनके इंसिजर्स पॉइंटेड होते हैं and canines designed for killing prey and ripping muscles. The premolars and molars are designed to crush food. Teeth of a carnivore, you can say like this. Now, digestion in omnivores. Omnivores consume both plant and animal matter. The length of their digestive system more closely resembles that of a herbivore as compared to a carnivore. इनकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम की लेंथ है वो मिलती है किससे? हार्बीवोर्स से ज़्यादा मिलती है. हाउएवर ओमनिवोर्स टेक द फर्मेंटिंग वैट्स फाउंड इन हार्बीवोर्स. सो एग्जाम्पल ऑफ ओमनिवोर्स इंक्लूड्स ह्यूमन्स, डॉग्स एंड बेयर्स. Omnivores contain teeth designed for biting, tearing, grinding and crushing. Feeding and digestion in amoeba. Amoeba में कैसे feeding होती है और digestion होता है? The amoeba is a protozoa. So it is unicellular organism. It is considered an animal-like protist because it moves and consumes its food. क्योंकि ये move होता है और अपने food को consume करता है. It has an unusual way of creeping along by stretching its cytoplasm into finger-like extensions called pseudopodia. The word pseudopod means false foot. Okay, so its cells membrane is very flexible. इसकी cell membrane बहुत flexible होती है and allows for the amoeba to change shape. So ये allow करती है कि amoeba अपनी shape को change कर सकता है. Amoebas live in ponds or puddles and can even live inside people. लोगों के अंदर भी रह सकते हैं. The amoeba can change its shape and position frequently. When a food particles comes near it, जब इसके पास आता है, it pulls out one or more pseudopodia around the food particles. So ये अपने जो pseudopodia है इसको निकालता है बाहर और food के around कर लेता है. The food particle gets trapped in the pseudopodia. वो फंस जाते हैं इसमें, which later develops a food vacuole. So then digestive juices are secreted into the food vacuole. They act upon the food and break it down into simpler substances. Gradually the digested food is absorbed. Okay, so इस तरह से digested जो food है वो absorb हो जाता है. The undigested food is thrown outside the body through the vacuole. Okay. So this is the digestion of food in amoeba, right? So आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से पूरा digestion इसमें हो रहा है. Now here are the new words, children. Let's read it. Nutrients, useful components of food. Ingestion, the process of taking food inside the body. Digestion, the process in which food is dissolved chemically. Absorption,
the process by which organisms absorb nutrients broken down into simpler substances. Assimilation, the distribution of absorbed nutrients to different body parts. Egestion, elimination of undigested food materials. Ruminants, animals that feed on grass or which can digest cellulose. Now wrap up the chapter with some important points. So, the breakdown of complex components of food into simpler substances is called digestion. Peristalsis movement in the alimentary canal pushes the food downwards. The liver is the biggest organ in the body. It is called the chemical processing center of the body. The digestion of food takes place in the small intestine. Villi on the inner wall of the small intestine absorb food materials. The facial matter is passed out of the body through the anus. Ruminants have a four-chambered stomach. Amoeba ingests its food with the help of its false feet or pseudopodia. The food is digested in the food vacuole. So now we will start doing the exercises. Exercise A, tick the correct option. Which of the following teeth are called cheek teeth, premolars and molars? Which of the following organisms captures food with the help of cilia, paramecium? Which of the following organs secretes bile juice? So bile juice कहाँ secrete होता है? Liver में, right? So we go ahead now. Question number 4. Millions of tiny projections called villi are present on the inner walls of small intestine. Which of the following is not a ruminant? कौन ruminant नहीं है? Dog. Okay. So, which type of teeth are called bicuspids? कौन से कहलाते हैं? Premolars. Biting teeth किसे कहते हैं? Incisors को. Hardest substance in the human body is enamel. How many pairs of salivary glands are there in our mouth? 3 pairs. Okay, the food pipe is also called oesophagus and the enzyme pepsin mainly acts upon किस पर काम करते हैं? प्रोटीन पर काम करते हैं. So let's go ahead. Question number 12 is the hormones insulin and glucagon are secreted by pancreas. Absorption of food takes place in small intestine. And which of the following nutrients cannot be digested by humans? Cellulose. Given below from first to fourth are some food items: boiled and mashed potato, glucose solution, a slice of bread and mustard oil. So which of the above will give blue-black color when tested with iodine solution? So कौन देगा? एक तो देगा a slice of bread or boiled and mashed potato. So the B will be the answer. Okay children, so now in these MCQs, rest of the questions you will do yourself, right? So we go ahead to the next exercise. Yes, exercise B. State whether true or false. The temporary teeth are 20 in number. Yes, this is true. The dentine of the tooth contains blood vessels and nerves. False. Villi are present in the small intestine. Yes, this is also true. The cell wall is made of cellulose. True. The liver secretes bile juice. This is true. The saliva changes starch into sugar. This is also true. Tooth decay is caused by some bacteria. This is false. The bolus changes into chyme in the small intestine. This is also false. Okay. And rest of the question you will do yourself. So, question number C. Match the animals with their mode of feeding. Housefly. Housefly क्या करती है? Sponging. Okay. Cockroach, biting and chewing. Mosquito, sucking, and infants, sucking. Okay. Infants भी suck करते हैं, right? So we go ahead. Question number 4. Fill in the blanks with the suitable words to complete the statement. Saliva is a digestive juice. There are
4 incisors in each jaw. The visible part of a tooth is called crown, right? The digestion of food takes place in small intestine. Hydrochloric acid is secreted by the stomach, and false feet are found in amoeba. Question number 7. Humans lack fermenting fats. Humans do not have ability to synthesize some amino acids. The digestion of all food components is complete by pancreatic juice. Question number 10. Large intestine absorbs water and some minerals from the undigested food. Children, these all you will do yourself and it will be your homework. So children, I hope that this chapter is clear to you now, and now you will read it again thoroughly, and then you will be able to give the answer to all questions which we left here. Okay? Thanks for watching. We will meet soon with the next chapter. God bless.